नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और रोज बरोज हम इसमें बातचीत करते हैं आज के मैनेजमेंट के साथ और उनसे चर्चा करते हैं विस्तार योजनाओं को लेकर। लेकिन उससे पहले दो अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो अभी जो थोड़ी पहले खबर आई है वो है खास तौर से राइट टू जो भी आपका केंद्र सरकार का जो भी एक जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में आया कुछ देर पहले, वो ये कि जो निजता का आपका हक है वो उसको लेकर राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ये अभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है और खास तौर से 9 जो जज हैं उनकी बेंच ने एक इसका फैसला लिया है और आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया है। तो ये एक अभी फैसला आया है। और दूसरा जो क्रूशल है वो है बट ऑब्वियस मार्केट, क्योंकि मार्केट्स मोर और लेस आज एक रेंज के अंदर है जिसमें पर्टिकुलरली 9852 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। जो बाइंग आज के सेशन में है वो सिलेक्टिव फार्मा और मेटल स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी ज़्यादातर सभी इंडेसेस जो हैं वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो या फिर छोटे मझौले शेयर हो। यहाँ पर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। छोटे पॉकेट्स में बाइंग इसमें लिकर स्पेस है जो तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ सेलेक्टिव जो आईटी है वो एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप और रिटेल शेयर जो है वहां पर भी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरईसी की मैनेजमेंट मौजूद है। मिस्टर वी रमेश हैं, CMD आरईसी के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। किस तरह के नंबर्स क्वार्टर के अंदर देखने को मिले और क्योंकि पहली तिमाही में थोड़ा एनआई के अंदर प्रेशर था, क्या ये मान के चले कि दूसरी तिमाही तक थोड़ा इंप्रूव हो सकता है? Let me try to explain what happens in REC. Now, REC is one of the major financing power sector development corporations. We have maintained a consistent profit of year on year on a CAGR of about 16 to 20%. Now, we declared a profit after tax for the financial year 16-17 of 6,240 crores. I mean, which is among the highest for any financial institution and also particularly for the public financial institution like REC. We are consistently performed both in terms of disbursements and sanctions extremely well. Last year our disbursements grew by 28% compared to the previous year, and our sanctions had grown 26%. So there is a consistent growth trajectory. Now during the first quarter of this year, our approval, the sanctions had increased by, compared to the first quarter of last year, by 113%. And our disbursement has increased by about 18 to 20%. Now, obviously, because of our interest is not only to make profit, but also to ensure that quality power is available 24/7 to the citizens at a fairly reasonable price. And this would means reducing interest burden to the utilities who are responsible for managing. So, with the prevailing circumstances where the interest rates are declining, we have proportionately also adjusted our interest rates. ओके सर, आपने ब्याज दरों की बात की क्योंकि आरबीआई ने भी जो रिसेंटली रेट कट किया है उससे क्या कुछ इम्पैक्ट आया है कंपनी के नंबर्स के ऊपर, और दूसरा सोर्सिंग ऑफ फंड्स जो है वो किस तरह की कंपनी के? Many people misunderstand when the RBI cuts its rates. They think that automatically it has a direct impact on organizations like ours. REC is an NBFC. We don't get any concessional money either from the bank, either from Reserve Bank, or from government, or from any source. We raise essentially resources from the market, and nearly 70% of our resources are raised through taxable bonds, and then a small part of it is raised through the 54EC bonds. Now, when Reserve Bank of India reduces its repurchase rate, which is called a repo rate, by 25 basis points, it refers to the cost of lending by Reserve Bank to the banks and to the state governments which are having a ways and means management issue. It does not refer to financial institutions like REC. We raise resources from the market for a long term because we are in the business of long term lending. So the
lowering of interest rates by the Reserve Bank does not have direct impact on REC's performance or its lending rates. However, we are sensitive to the fact that there is a need for making available capital for investment in strengthening the capital assets, particularly of the distribution, transmission, and in several cases generation, and especially the renewable energy sources. So we have to say it all. So that's why we also have moderated our interest rates. But our interest rates or our cost of lending has little bearing with that of the Reserve Bank's repo rate. ओके सर, एक चीज और है क्योंकि कंपनी की लोन बुक की जो सिचुएशन है, पहले तो वही जानना चाहूँ किस तरह की है। दूसरी चीज कि जो डिस्कॉम से कंपनी को रकम है जो मिलती है उसका क्या स्टेटस है, क्या आप फर्दर फंड रेज की भी कुछ योजना बना रहे हैं? Let me put this. Our loan book now stands around 2,07,000 crores. Now, our loan book would have grown to 2,50,000 crores had there not been prepayment under Uday. Uday, the distribution companies, those who have signed on to Uday, have returned about 44,000 crores to REC last year. So these 44,000 crores, we had used them to lend to the utilities, and we reinvested in new projects which are taken up by different entities across the country. Now, with reference to the raise, so this year, so there has not been a significant growth in the loan book between 16-17 and 15-16. So this year, we expect the loan book to grow significantly. We have a borrowing plan of about 60,000 crores during the current year, of which we propose to raise about 52,000 crores in the domestic market and about 10,000 crores in the international market. We are taking measures in that regard. So we would expect a robust growth of about 15 to 20% of our loan book this year. Okay. आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट डार, हम बातचीत कर रहे हैं आरईसी की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ मिस्टर वी रमेश मौजूद भी हैं। सर, जो मेरा अगला सवाल होगा वो कंपनी के एक्सपोजर को लेकर होगा, प्राइवेट सेक्टर को लेकर किस तरह एक्सपोजर है, और अगर आप कंपोजिशन समझा पाए, किस तरह कंपोजिशन है कंपनी के प्राइवेट, पीएसयू या बाकी जो प्लेयर्स हैं, किस तरह कंपोजिशन कंपनी के पोर्टफोलियो का? Now, in the total portfolio, private sector exposure is about 15% as we talk now, and 77% is state sector, and about 8% is a joint venture. This joint venture is between the central public sector utilities and the state utilities. So this private sector exposure is about 15% of our total loan portfolio. जी सर, एक और चीज है कि एसेट क्वालिटी वाइज देखें तो एनपीएस के अंदर पिछले 4 साल से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है, लगातार वहां पे बढ़त आ रही है। क्या कोई कंसर्न कंपनी से मान रही है? कुछ प्रोविजनिंग का स्टेटस भी बताइए कि एनपीए बढ़ रहे हैं तो प्रोविजनिंग बढ़ी होगी, क्या कुछ प्रोविजनिंग आपने की है एडिशनल इस एसेट क्वालिटी को लेकर, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे कंपनी से ईज आउट करेगी? Among all the financial institutions, the banks or the non-banking financial institutions, particularly those who are in the infrastructure lending business and especially the power sector lending, REC has the lowest NPAs. Our gross NPAs are about 2.6% and our net NPA is about 1.73%. So we have a relatively low NPAs. Nevertheless, we are concerned about the fact that the assets are not performing. In many of these cases, we are part of a consortium. We are not the sole lender, except in 1 or 2 cases. And it's the consortium the other lenders are leading. We are making a very serious and sincere effort to see that these assets are brought back to standard. There are measures being taken by the government at the policy level. There are measures being taken by the financial institutions. We are actively engaged in the Joint Lenders Forum institutions. We are appointing very senior international consultants to help us in managing these NPAs. We review them every week. We have set up a stress reset management unit in REC to have a special focus on these assets. So overall, I would like to say that we are concerned about the NPAs, but however, we are confident the NPAs are not going to grow, and we will contain them and will ensure
to the extent that is possible that these assets are brought back to standard. जी मिस्टर रमेश, एक चीज और है क्योंकि कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी फोकस है और इस सेक्टर में बहुत कुछ हो भी रहा है, चाहे प्राइसेस को लेकर हो जिसमें एक स्टीप फॉल हुआ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर हो, नई कैपेसिटीज एडिशन को लेकर हो, बहुत कुछ हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितना फायदेमंद मान रहे हैं इस पूरे सेक्टर में अगर एक्सपोजर बढ़ाया जाता है तो? Ultimately, as a public financial institution, our responsibility is to support the government in the goal of providing a quality power at the most competitive rate. The idea is not to maximize profits. Of course, I mean, our shareholders would be interested in profits. We will continue to be profitable. We will increase the volumes. We will increase our business. We diversify. We expand the horizon. But the fact remains that the country is committed to having a mix of renewable, mix of about 40% by 2030. Ours is the only major country that has committed itself to having only electrical vehicles after 2030 onwards. And so we are looking, actually, we are preparing a vision for REC 2030 to see how in this days of accelerated disruption of technology, especially in the renewable sector, how we can cope with it, how we can finance it, how we can remain profitable. And that is a big challenge. We have taken it head on. As you could see, our share of renewable lending earlier used to be, which is less than 0.1%, has now grown to 3% of our loan portfolio last year. And I'm hoping that this year 10% of our total lending will go to renewable. So we have set up a separate unit for renewable energy. We have strengthened that unit. We have made a number of changes in our lending policies. We made it very flexible. जी मिस्टर रमेश, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है आपके लिए उत्तर प्रदेश का मार्केट। आप वहां से काफी बिजनेस डिराइव करते हैं। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बातचीत कर रहे हैं आरईसी की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ मिस्टर वी रमेश मौजूद भी हैं। मिस्टर रमेश, अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो सेगमेंट वाइज रहेगा क्योंकि कंपनी के जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं उसमें किस तरह का सेगमेंटल इनफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा है, कहाँ किस सेगमेंट कंपनी को ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या किस सेक्टर को आप देख रहे हैं कि ज्यादा अपकमिंग है, अच्छी ग्रोथ है वहां पर? Now, this year, as I said, the sanctions have grown about 113% compared to the first quarter of 16-17. And these projects are fairly diversified. About 57-58% is in the transmission distribution segment. And this is a good reflection because we have had a major bottlenecks in the states of both the transmission, intrastate transmission infrastructure and the distribution infrastructure. So there is a big need, investment need of almost 100,000 1 lakh crores every year in the distribution segment alone. Now, this is not discounting the overall power sector requirement of 2,50,000 crores. So, rightly, because where the biggest bottleneck, which is in the distribution segment, we have invested substantially, almost about 38-39% in the distribution segment. This is all the capex loads, the transformer, feeder separation, strengthening of the grid, smart grid installation, co-financing the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, and the rest is in the renewables. Renewables, we have stepped up our sanctions. Of the 33,000 sanctions, about 3,000 about is renewables, and then on the generation segment, I mean, there are new power projects like Udankulam in Tamil Nadu, where there is a hypercritical thermal project that is one of the major investments, and the other projects across the country which is augmenting the generation capacity. एक चीज और, एक आरोप भी लगे हाल में आरईसी के ऊपर, वो थे सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के आरबीआई की जो भी नॉर्म से उनका पालन नहीं किया गया डिसबर्समेंट के टाइम पर। आप इसे क्या कहना चाहेंगे? We have clarified this both in the public domain and through the media, and let me categorically say this. Yes, REC, the CAG, the Control and Auditor General, has given a report on the independent power producers financed by REC and PFC. This is a joint report. It does not refer to REC alone.
Now, the number of observations made in the report, those observations, a number of them are very important, very significant, need to be taken very seriously. But as far as REC is concerned, CAG has very categorically said that we have complied with all stipulations, requirements and standards prescribed by the regulators, especially the Reserve Bank of India. So REC is in compliance. It is incidental that the report relates to both REC and PFC, but the comments do not relate to REC. REC has a very low NPA, so we have a stellar. जी चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रमेश अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, कंपनी के नंबर्स को लेकर भी और साथ साथ ये जो सीएजी की रिपोर्ट है इस पर भी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। तो आप सुन रहे थे आरईसी की मैनेजमेंट को, शेयर करीब करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है, मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही अभी कामकाज करते हुए।